first? Yes, go ahead. Jai Guru. Namaste and Jai Hind. Welcome all. I'm Snigdha Bharadwaj, and I don't know if you know me from my Insta handle yogic_hacks. This is my new Insta handle, Snigdha Astro. And let me first introduce you to Pandit Dr. Sanjeev Kumar Srivastava ji, who's going to be. I'm feeling really lucky to have him here. और बहुत सारी चीजें पता चलेंगी नाड़ी ज्योतिष के बारे में. हम में से बहुत कम लोगों को पता है नाड़ी ज्योतिष क्या होता है. ठीक है, तो let me first give his introduction. उससे पहले I'll just tell you more something about myself. I've been an ex-Indian Air Force officer, technical. I'm an engineer by profession. Was an engineer by profession. फिर उसके बाद जॉब वगैरह छोड़ के योगा टीचर बन गए और आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी बन गए. अभी तो मुद्रा सिखाते हैं yogic_hacks में, और अब यहाँ पे नाड़ी एस्ट्रोलॉजर भी बन गए. ऑल थैंक्स टू पंडित जी. तो इनका ध्यान से सुनिएगा इंट्रोडक्शन. एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा. पंडित डॉक्टर इतना ज्यादा पंडित जी का ये है ना, क्या कहते हैं, इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन है कि मेरे को लिखना पड़ा सब, इसलिए बोर मत होइएगा लेकिन सुनिएगा जरूर. ठीक है. Pandit Dr. Sanjeev Kumar Srivastava is an internationally renowned, most accurate Nadi and Vedic celebrity astrologer who has mastered Nadi astrology and is consulting over 65 plus countries. Baapre. He has been doing accurate predictions 90 to 95% and above since last 27 years. 27 साल से कर रहे हैं. He is one of the best astro consultant trusted by people for perfect predictions all across the globe. His various perfect and most accurate predictions include Gujarat election, Himachal election 2022, Russia-Ukraine war, UP elections, coronavirus, lockdown, Ram Mandir, Lok Sabha, Delhi elections, UK PM Boris Johnson, World Cup, IPL match, Balakot strike, and many more. गिनते रहो, पेज भर जाएगा. He tweets his predictions on @Sanjeev_astro on Twitter. अगर नहीं है ज्वाइन किया तो कर लेना, Sanjeev_astro फॉलो करने के लिए. Pandit Sanjeev Kumar Srivastava ji has received an award entitled of Living Legend in Divine Sciences from the Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji. Wow. He has also received an award Jyotish Vibhushan from the Chief Minister of Uttarakhand, Shri Pushkar Singh Dham ji. देखिए कैसे पूरा देश recognize किया है. Pandit Sanjeev Kumar Srivastava has received an Excellence Award and title of Living Legend in Nadi Astrology from the Diva and Versatile actress Shilpa Shetty at Global Business Award. ये बहुत हाल में ही हुआ है. He uses ancient Nadi sutras for perfection in all aspects of prediction. He also specializes in फिर से गिनना शुरू कीजिए, वास्तु, numerology, palmistry, mantras, gemstones, homeopathy, and suggests remedies which are very easy and highly effective. I can vouch for that, definitely. Pandit Sanjeev Kumar Srivastava has taught Nadi astrologer to over hundreds of students across the world and has enabled them to become professional astrologers and guide. I'm also one of the living examples, lucky student. He is a devotee of Gurudev Shri Shri Ravi Shankar ji, an art of living happiness program teacher. Pandit Sanjeev Kumar Srivastava belongs to an astrologer's family and has started learning astrology at a tender age of 9 years from his father, who was a renowned doctor and astrologer. Wow. He believes that with the grace of Guru, devotion and astrology, prayers and rightful karmas, one can be protected and can change many things positively up to a great extent. By following his suggested remedies, one can live a happy and prosperous life and overcome negative energies, obstacles, difficult phases, and negative karmas. अब कुछ hope मिला? जय गुरुदेव. जय. Wow. जय गुरुदेव.
Thank you so much, Snigdha-ji. I know for such a elaborate, profile and elaborate description of the things. Thank you so much. Although it's all, I think I would say in one line, it is all grace. Whatever is there, it is all grace. Without the grace of Guru and Divine, it was just not possible. So let's take our thing forward, Sigda ji. And before we take it forward, very interesting session today. So I like everyone to sit, relax, and give attention for next 45 minutes, and you will see many amazing things. And there's a lot of Q&A, question answer also, I think, from the viewers we will take, and from Sigda ji, whatever be the questions coming from viewers to Sigda ji, we'll be taking all those questions as well about general astrology, general myths, and we'll be discussing a lot of things. Okay, so I'm sure this will be an interesting session. Before we start, I think let's chant Om maybe 3 times, and then let's say Guru names, and then we will do that. Okay, so just close your eyes, take a long breath in, and breathe out. Let's chant Om 3 times. Breathe in. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Shri Gurave Namaha. So, going down to the lotus feet of Gurudev and starting this talk, presence of divine, I would just say that this beautiful knowledge of Nadi astrology, which we plan to discuss today, is coming from the divine only. Without his wish and blessings, this was not possible. This was hidden somewhere. Very few people were practicing Nadi astrology in the whole world. Hardly a few. I would still say that as of now, even I have taught hundreds of students, still it's 0.00, less than 0.01% people who are aware of Nadi astrology or who are Nadi astrologers, right? And there are variations of Nadi astrology. There are many variations of Nadi astrology. But before we discuss Nadi astrology in detail, I think first let's understand what is astrology or what is Jyotish. See, in one line, as Gurudev says, Jyotish is a GPS of life. Or in other words, I'll say Jyotish is a GPS of life events. Or in one word, I will say Jyotish is wisdom of timeline. If you have wisdom or knowledge of timeline, you can achieve so many things in a life that is beyond your imagination. This is such a wonderful knowledge. ज्योतिष जो है वो एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो विजडम है किसका? टाइमलाइन का. विजडम या नॉलेज है टाइमलाइन का. और इसको और वर्ड में बोला जाए, सो दिस इज ए जीपीएस ऑफ लाइफ इवेंट्स.
लाइफ में बहुत सारे इवेंट होते हैं. वी हैव सो मेनी इवेंट्स इन आवर लाइफ, फ्रॉम ब्रीद इन टू ब्रीद आउट. वी हैव सो मेनी इवेंट्स. Like Jyotish starts, even the person is born, you know. So people come to astrologers, my wife is pregnant and I want some good muhurta where, doctor suggested for surgery. Can you give some muhurta for that? Good day, good time. So even before the breathing is there, Jyotish starts. Just even before breathing. So that is the power of Jyotish. And we'll understand more in detail. So as the person reads in, at the time of birth, the rising sign, the constellation, the positions of nakshatra, planet, rashis, and all the things taken care into account, and one chart is formed, which we call as kundali or birth chart. And then there are so many variations, or there are so many branches in Jyotish. See, Jyotish is Vedang. This is the only thing which goes with you. It's the only thing. As it's coming in my mind that, we earn so much of wealth, we earn so much of property, we earn so much of name, fame, nothing goes with us. But any knowledge of Vedanga or Ved, that is one thing which goes with you, means Jyotish. If you learn Jyotish, now it will be there with you in your conscious forever. That is one part. Another is Bhakti. These only two things goes with you. Nothing else goes with you. So it's very important to learn. Everybody must learn Jyotish in their life. And especially I am talking about Nadi Astrology. See, when we talk of origin of Jyotish, this is by timeline himself, by Mahakal himself. So Jyotish is very ancient, very, very ancient. You can't say that is 5,000 years old, 10,000 years old. No. In Krishna Yajurveda, in many, many ancient scriptures, you will find the description or mention of nakshatras, constellations. Their names are different, not in the present form, but very similar. The characteristics, feature, many of the nakshatra names have changed. Not everything has changed, but many of the nakshatra names. And there is a lot in nakshatras. Unless, so I was talking about the Jyotish branches. So there is Vedic Jyotish, there is Nadi Jyotish, there is Gemini, there are so many branches. Many people over the years, I am teaching for so many years, and many people come to me after learning years and years of Jyotish, years and years, studying Jyotish. What they say, I have learned from various people, I have learned from YouTube, I have attended coaching from various institutes, I have learned 5 years of Jyotish, I have learned 10 years of Jyotish, but I am unable to do prediction. I can't predict. I say, you come to the right place. You have come to the right place, because prediction is just not possible in Vedic Jyotish. It's 50%. Maximum 60% is good. So 50% is probability for any event. It can happen, it cannot happen. But Jyotish is beyond 50%. If you can't predict an event more than 90-95%, then it's of no use actually. 50-60% is a probability, probably, probability you all have read and in your classes, in your 10th, 12th paper and exams. So that's why, in last so many years, although we have so much knowledge, people are so learned in Vedic Jyotish, so many good people, but as far as prediction is concerned, this goes haywire. And it applies to all the, great people. They are great astrologers, great people, great human being,
great knowledge, but the prediction goes haywire. Sometimes happens, sometimes doesn't happen. Sometimes happens, sometimes doesn't. It is not their fault. They are absolutely good and great human being and great astrologers. But if you just do Vedic astrology, you won't be able to reach anywhere. See, I have just heard from many astrologers and my own experience. See, even before I was learning, I've learned astrology formally, like in childhood or in college times. Most of the things I used to predict by seeing the hand or seeing the face or with my intuition goes right. Most of the things. So, but then I was not happy and satisfied. Why there is so much gap? Why only out of 10, only 5 or 6 are correct? It is not something very great. That, inculcated at that kindled me the interest of Jyotish. My father was a very good astrologer. He just saw face and tell you everything. So it was another level of Jyotish. But, if I talk about the details of Jyotish, then Nadi astrology, there are many branches of Nadi astrology. So there are, one is Parashri astrology, which is what we call it Vedic Jyotish. One is Nadi astrology, where we have, Agastya Rishi and Bhrigu Rishi. So most of the Nadi you have heard on the, Tamrapat or on the leaves is basically Agastya Nadi, where you know about the past very accurately. You go to any astrologer, they will take the thumbprint and they will tell you to come in certain days, and they will take out based on your thumbprint and ask you certain random questions, and then you will you will get to know about your past. Okay, you are born in this town, your birth has been there, your family member's name is at this. That you can find out more or less accurately after series of questions they will ask, and they will then tell you present about something, and they will tell about future. But that, as far as the research goes, as far as research data goes, that in that Agastya Nadi, past can be predicted very good, but future is still, I think, goes 50, 60, 70%, not more than that. Yes, Stigdaji, you also had some experience like that? Yeah. So बहुत सारे. So yeah, that is the same experience. Yeah, I ask everybody. I am a software engineer by profession. So most of the life I have coded the things, coded the softwares and technology, and then management. I was managing the whole project, and now what I'm doing is decoding of life, and managing and guiding people. So the skills, the research, why when you do coding, you need a lot of research. So we have done a lot of research, a lot of analysis, and then found, oh, no, this is not something which goes, absolutely perfect. And then there is based on certain questions, certain things. And then obviously that is okay. You ask questions, but then if the future is not right, that is not something which can. So that is also a kind of, I would say, not is going beyond 60, 70%. Then comes this Bhrigu Rishi, the lineage of Bhrigu Rishi, which is Nadi Nakshatra. There are so many type of Nadis. See, there are more than 150 types of Nadi. Dhruva Nadi, Sthir Nadi, Shiv Nadi. There are so many kinds of Nadis, variations of the Nadi. Raghunandi Nadi, there are so many. But the most accurate one in the universe, I'll tell you, this is Nadi Nakshatra only. Nadi Nakshatra, based on so many years of research, analysis, predictions of over maybe 1 lakh of charts. I can see that nothing is close to Nadi Nakshatra that my student learned. That Signaji also have learned, and many of the 100 students have learned. Nothing is close. See, I can't say just by, Google. I have to go into. So I have gone through many of the Nadis, various Nadis, try to understand those things, how these works, how these principles works, and I have said nothing is as close. Yeah, some Nadi principle goes up to 80%,
but nothing is as close as 95-97% as this nakshatra nadi. Not even BNN, not even Bhrigu Nadi, not any other form of nadi. You know, people mix so many things. They mix Parashri, they mix Nandi Nadi, they mix Lal Kitab, they mix so many things and then come to predictions, and that is also not that close. But when I've gone through all these scriptures, texts, and when practicing the horoscopes of so many people across the world, across the religion, across the genres of across the different countries, I realized that nothing in the universe is as perfect as Nadi Nakshatra astrology. Beyond this, only divine can be accurate, actually. That is what my experience is. Beyond this, obviously, you as an astrologer, you can do many errors. That is a different thing. As an astrologer, you can think always, when I teach astrology, I say, even your prediction is 200% accurate, say 99%. Don't say 100%. Because 1% is divine will. He can change anything, anytime. Divine can change anything, anytime. So, 1% is always divine. You can say, okay, 90%, 95% based on your, analysis and research and everything. So, Bhrigu Nadi Nadi or Bhrigu Rishi, the lineage of Bhrigu Rishis, all the different forms of Nadis, most accurate is Nadi Nakshatra. Okay, and then you have Parashina. That is also good for knowledge of planets, stars, Rashis, all those things. That is there. So in Nadi astrology, basically you go at 3 levels. See, in Parashina, you see planet, Rashis, the Rashis and the houses and everything. That is level 1. In Nadi Nakshatra, you see this level 1 also, but then you go more detail in the nakshatras. Okay, and then you go more detail in their sub-lords or up-nakshatras. So you have 3 levels where you verify whether this event will happen or not happen. Although in Vedic astrology, you verify only at 1 level. That's why it's just 50-50 accurate, 50%, 60%, not more than. I've not seen even a single astrologer who can predict 70, 80 or 90% without the use of Nadi Sutras. If somebody is predicting 80-90% or above, he is surely 200% using Nadi Sutras in the prediction. Even if they are Vedic astrologer, that's fine. I've seen people, many people I have seen. Right? So this is so accurate, so positive. Yeah, definitely Vedic astrology you learn, good for knowledge, good for things, good for fundamental. That is good. But Nadi astrology is altogether different game. We don't apply Vedic astrology while teaching Nadi astrology. No. If you apply, you learn only 50%. I have seen many students who learn from past backgrounds. They have so much of Vedic astrology knowledge. Or I said, put that knowledge. So you see, if your cup is full, you can't put more. It will only overflow. I say empty your cup. Put that knowledge, whatever you have in the almirah, close down the almirah and lock it forever. Don't use that knowledge. Right? Because if you mix 2 knowledges, it will not help you. It will not take you anywhere. Although whatever is required to learn Nadi astrology, whatever wisdom is required, whatever fundamentals required, we do teach in Nadi astrology. The basic astrology. Right, Siddhaji? We have also learned all the basic of astrology. Bilkul. So whatever is the basics of astrology, you learn, the basic fundamental. But then we leave it set aside and say, okay, now this is basics. Now you learn to the prediction part. Right? And that makes you, and the practice, and the practice, and the practice. There are only 3 rules. Practice, practice, practice to learn the Nadi astrology. Right, Sigdaji? And we have done so many practice. You only can share about the practice and everything. How many? I will definitely like you to share. Sigdaji has learned Nadi astrology and she's doing good.
and you can share your experience. So, that is the power of Nadi astrology is amazing. You can't even imagine. Within 6 months, one astrologer is right in front of you, right? So within 6 months, and there are hundreds of astrologers who are practicing and earning there. See, seva is one thing. You can do seva. You can use as a second profession. You can use as a main profession also. You can use to help people and guide people, your near and dear ones. You have yourself, you get clarity of your own things. You get your own things aligned so well. So Nadi astrology, if I say everybody should learn, then I mean it. If I say astrology is one of the greatest and strong pillar on the path of enlightenment, then I mean it. Because as we go ahead in the discussion, you will know everything is, related with your stars only. Right, Sigdaji? So, Sigdaji, I see so many questions. If you wish to take any, or if anything coming, then we can talk also about that, and then maybe I'll continue with my. I'm noting down. I'm noting down. Okay, sure. You're noting down. Good. So so astrology and this what I teach, and so it's just 2 hours a week. Just 2 hours a week, and we go through hundreds and 300s and 500 charts. In just 6 months we go, and obviously I do give homework. I do give, and there are a lot of wisdom lesson. A lot of wisdom in all the classes. Lots and lots of life wisdom, Jyotish wisdom in all the classes, and you learn such a big thing. Your family members, everyone shares, their family members, their cool friends are like shocked. Oh, what a thing you have shared, or what an astrologer you are. It's just a 6 months course, 2 hours every week, and you practice so much and you get so much of perfection that by the end of 6 months you are an astrologer, professional astrologer. See, I tell you, I commit to all my students that if you join my class regularly, sometimes obviously if you are on leave, definitely you can see the recording is available. But if you join my class regularly, I tell you, within 6 months I'll make you a professional astrologer. See, teaching astrology is one thing. I say I don't teach astrology. I tell it to you also. I don't teach astrology. I make astrologers. They see difference between teaching and astrology. Hundreds of people teach astrology. There are so many people. YouTube is full of that. Universe is full of that. कितने सारे लोग हैं जो ज्योतिष पढ़ाते हैं, बहुत ज्योतिष पढ़ाते हैं. मैं बोलता हूँ, मैं ज्योतिष नहीं पढ़ाता, मैं ज्योतिषाचार्य बनाता हूँ. I don't teach astrology, or I would say I don't teach just astrology. I make astrologers. Okay, so if you ever thought of becoming an astrologer, trying to help your family, people, just join my class. I would say within less than 6 months, in 2 months, you will learn prediction. In fact, from second class, you will learn prediction. Right? So that is what all about I would like to share, and then we'll go ahead. Let's go to some questions, some talk, or some whatever is coming. I think many people are waiting for their questions to be answered. So let's do that. So I'll say, Nadi Jyotish is the rarest of rare knowledge. Nadi Nakshatra, which I teach, is rarest of rare knowledge in the universe. You all must learn. Try this out. I say like you might heard or see or wish that, oh, before I die, the 7 wonders of the world, or this word I must do, I must go there. I tell you, before you die, learn Nadi astrology for sure, and you will not regret forever. You will not regret even for one class. All the students, if I take leave, all the students get little this thing that, oh, class is not happening, because that one class holds so much of precious knowledge, wisdom, and sutras that they get elevated and elated that, okay, this class has happened. Right, Snigdha ji? What?
Yes. So we'll share the details of the on my Insta. The detail is already there. Sanjeev_Astro. I have posted there on my Insta, and maybe Snigdha also will have post the details on their channel, so that you will find. And let's start with another things which user are posting, so we'll hear more about it. Yes, Pandit ji, we have some interesting questions here. सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आया है, राम और सीता के 36 गुण मिले थे, फिर भी सीता को वनवास क्यों हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत, देखिए मैं आपको बताता हूँ, गुना से मैच मेकिंग कभी होती नहीं, और ये शायद आपको बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर्स बोलेंगे दुनिया में। गुना की वैल्यू जो है सिर्फ 5% है। सी, आज से मैं ये 10 साल पहले 15 साल पहले से बोलता हूँ, पर कोई बिलीव नहीं करता था मेरे पे, पर आज सब बिलीव करते। आज सारे एस्ट्रोलॉजर्स को समझ में आता है, ज़्यादातर जो रिसर्च मोड में, जो सही में चाहते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन 90-95% एक्यूरेट रहे, उनको सबको समझ में आता है। तो गुना से देखो, 36 गुण वाला, 32 गुण वाला, 28 गुण वाले को अभी डाइवोर्स हो सकता है, उसका भी सेपरेशन हो सकता है, उसका भी वनवास हो सकता है, और 12 गुण, 8 गुण, 4 गुण वाले की शादी भी बहुत अच्छी चल सकती है। We have done so much of research, so much of data. We have many thousands of horoscope where we have seen that gunas are matching 28, 32, 30, whatever, 22, but 26, and divorce has happened. And we have so many horoscope where we have seen even 12 gunas, 18 gunas, 4 gunas, marriage has gone very well. So guna medium is wrong actually. That is not applicable. Maybe that kind of thing were applicable maybe 500,000 a year back, but not now. In Nadi astrology, we see the energy of spouse energy, separation energy, ego energy, obstacle energy. So in Nadi astrology, we talk in terms of energy. And we measure how much spouse energy one person. So spouse energy is something like that. How much value you will do with your spouse, how much value you will give to your spouse, how much attention you will get from your spouse, either is physical, mental, emotional, health, progeny. We check almost 20-25 factors in Nadi astrology. So nothing in the universe is more accurate in matchmaking than Nadi astrology. And we have proof and research of thousands of horoscope. It is not just I'm saying like that. We have seen so much data. And I think Sigdaji can share that. We have seen so many in the classes also. 28 gunas, 32. We measure the spouse energy, which is different way of measuring the altogether different way of doing the matchmaking in Nadi astrology. So nobody is as close. We have never seen the violation of how it has happened. I don't know. Like in Vedic astrology, 36 gunas are there, 38 gunas are there, 28 gunas. Why the divorce has happened? It is not. If divorce has to happen, it will be known in advance. So we usually tell, these are the plus, these are the positives, and these are the negatives, and these are the year of challenges. Now you decide, you want to marry or not, or we do. So our way of, and my students' way of, matchmaking is totally different. Our way is totally different. So definitely guna, you should not go for guna matchmaking at all. If somebody is saying your marriage can't happen because you have 18 guna or 16 guna, or you say good marriage because of it is 30 guna, absolutely wrong. Please verify with any good Nadi astrologer if you have any doubts, or just to double check. It is always good to know how much. मैं कहता हूँ कि गड्ढे में कूद रहे हो तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कितना गहरा गड्ढा है, ठीक है? कोई बात नहीं, जस्ट फॉर सन। वैसे मैरिज तो देखिए सबकी लाइफ आगे ही बढ़ती है, पुरुष और स्त्री दोनों ही आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा है, बट एक दूसरे की कमी के बारे में अगर अवेयर रहें तो अच्छा रहेगा। तो गुना का मीडियम बिल्कुल सही नहीं है, उसको बिल्कुल कंसिडर मत करें। नाड़ी एस्ट्रोलॉजर से चेक कराएं, वो भी नाड़ी नक्षत्र, कि भाई ये सही है कि नहीं है मैच की, तभी आप जा सकते हैं। और हमारे तो इतने सारे स्टूडेंट्स सब एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं, हमको भी रीच आउट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को रीच आउट कर सकते हैं, दे विल गाइड यू। यस, बहुत सही बताया।
पनीर जी आपने। अच्छा, एक शादी से रिलेटेड ये होता है, मांगलिक दोष है, इनसे नहीं करना चाहिए, या लड़का मांगलिक नहीं है, लड़की मांगलिक नहीं तो जान चली जाएगी, इस तरह से। ये अभी सब देखिए तुरंत एक बिल्कुल, अभी ये अभी सब, एक क्वेश्चन आया इसी से हाँ, ये रिलेटेड। सब मिथ है, बिल्कुल इनसे भरोसा बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें इन सब चीज़ों पे। ये मांगलिक वांगलिक कुछ नहीं होता। और मांगलिक का दोष जो थोड़ा बहुत होता है वो भी और दोष का ना देखने का तरीका है एक्चुअली। अगर दोष थोड़ा होता भी है तो वो भी 28 साल के पहले जो है बाद में खत्म हो जाता है। 28 साल का जब युवक युवती हो जाते हैं तो वो खत्म हो जाता है। पर मांगलिक दोष जो हमने बना रखा है ना, वो बिल्कुल गलत है। हमने बोला कि 6 प्लैनेट्स में अगर मंगल है, किसमें, फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, 12th हाउस में, अगर मंगल है तो वो मांगलिक हो गया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 6 प्लैनेट्स में। आपने क्या किया, आपने 50% जो पॉसिबल गुड स्पाउस थे, चाहे वो गर्ल्स थी या ब्राइड थे या ग्रूम थे पॉसिबल, उनको हटा दिया, तो अपनी चॉइस वैसे ही रिड्यूस कर दी। ये मांगलिक है। मांगलिक नाम की कोई चीज होती ही नहीं, उसको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए। नाड़ी ज्योतिष में तो बिल्कुल नहीं माना जाता। हम मानते हैं स्पाउस एनर्जी को, ठीक है। अगर सपोज आपके मांगलिक फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में, सेवंथ हाउस में, एट्थ हाउस में, 12th हाउस, कहीं पर भी आपका, पर अगर मंगल की एनर्जी 2 7 11 है तो बहुत अच्छा है आपकी शादी के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और वो सिर्फ आपको नाड़ी एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। हम मांगलिक दोष कब मांगते हैं, अगर मांगलिक होगा भी तो अगर उसमें कहीं सेपरेशन एनर्जी है, डाइवोर्स एनर्जी है, तो हम मानते हैं। So we consider Manglik dosha only when there is a negative energy present in that planet, nakshatra and lords. If the planet, if Mars is present in first house, fourth house, seventh house, eighth house, 12th house, we don't consider just by presence it is negative. That is a wrong misconception. You should not consider that and, oh, this is a Manglik, I like everything, family is good, girl is good, beautiful and everything, but there's a Mangal dosha, then I can't marry that girl. Absolutely wrong. Please get it checked with a Nadi astrologer, because he will guide you the right path. This is very, very misconception. People who are doing it, I can't say anything to them, but I will definitely request them, to go through all the practical cases, research, see in Nadi astrology how things happens, and you'll find that one planet can't destroy your marriage or remove your marriage or can be a reason for your death. No, never in Jyotish. No good astrologer will tell you that because of one planet your whole life will be bad or this marriage will be not. Absolutely not. It is only the combination of the planet. Till the time 3-4 planets are there conspiring against you, you can't have any positive or negative event in your life, for sure. Either it is your life event or either it is global event. See, Corona came. Corona came because at least 5-6 planets have conspired against the whole energy. See, Nadi astrology tells you exactly where is the problem. See, Nadi, you understand, you might have heard, you go to a doctor who does Nadi Pariksha, and just by touching your Nadi or nerve, he tell you everything without even doing testing and everything. Similarly, Nadi Nakshatra. Nadi is what? Nadi is a technique where you touch upon the nakshatra and you say where is the problem. So nakshatras are the nadis of the whole consciousness or whole zodiac. Nakshatras are the nadis of the whole zodiac or whole consciousness. So when you touch on the nakshatra, go deeper in that, we'll know everything about the person, everything about the matchmaking, and don't worry about the manglik dosha. This should be checked with the relation with all the nakshatra. Then only you can say whether this marriage is good or not good. Got it? सही है। ये एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन जो सबके मन में चलता रहता है कि इफ अ पर्सन हैज लॉस्ट द जॉब और फेसिंग अ प्रॉब्लम इन बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप और जॉब, can astrology help them? That is, Nadi astrology can help them. Absolutely, absolutely. Signaji, I will speak 2 words and then you share.
See, it can tell you exact date when you can join and when you will leave the job. It is so powerful. So, Nadi astrology, you will know everything. What kind of profession you will go, which type. There are more than 20, 25%, 30, right? Although there are hands of profession, but in Nadi astrology, you learn minimum 30, 35 of professions, type of professions, minimum. Okay, this chart, this person will go in this profession, will be successful in this person, is in this profession. And you specifically tell that, okay, after his studies, he will go either for first his further studies or he'll go for education. And you clearly say if somebody is jobless, you can clearly give the timeline. Okay, this timeline to this timeline, you will get the job, or you will get a transfer, or you might be laid off also, if there is some negative energy. Signa, what is your experience about, your बिल्कुल भैया जी, this is the most common challenge that people come to me. At least अभी तो हमने just शुरू ही किया, छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन yes, job, business partnership और स्ट्रेस इन जॉब, कब तक चलेगा, दूसरी जॉब देखें कि नहीं देखें, कब तक मिलेगा, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चंस है. आपकी जॉब कैसे चल रही है, जॉब में प्रेशर है, दिक्कत है, डिस्कम्फर्ट है, क्या कब होने वाला है, एवरीथिंग क्लियरली टाइमलाइन पता लग जाती है कि ये होने वाला है, और एग्जैक्टली वैसा ही वैसा होता है. इट हैपेंस एग्जैक्टली लाइक दैट. दैट इज द पावर. इट हैपेंस, द ब्यूटी इज दैट हैपेंस डेट वाइज एंड मंथ वाइज. दैट इज द ब्यूटी. यस भैया, ये राहु केतु शनि एक्सेट्रा के नाम सुनता ही ना लगता है जिंदगी खत्म हो गई. तो ये सचमुच इतने भयानक प्लैनेट्स हैं कि ये इनसे मतलब 100 में रहना चाहिए. मैं कहता हूँ सारे प्लैनेट अच्छे, सारे प्लैनेट अच्छे. प्लैनेट आए किस लिए? आपको अपने कर्मों को दिखाने के लिए आए बस. अगर आप अपने कर्म अच्छे करते हैं ना, आपको आई टेल यू कोई भी प्लैनेट खराब नहीं. शनि भी अच्छा है, राहु भी अच्छा है, केतु भी अच्छा है. आप अपने कर्मों को देखिए, और जो कुछ भी जाने अनजाने गलत किया है उसकी माफी मांग के, उसको सरेंडर करके, उसको गुरु की शरण में छोड़ के आगे बढ़े, और आगे कोई नेगेटिव कर्म ना करें. ये प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ आपको कर्म दिखाने आते हैं. कोई प्लैनेट खराब नहीं होता, सारे प्लैनेट अच्छे होते हैं. और कई बार तो प्लैनेट कोई और गड़बड़ होता है और हम दोष शनि को दे रहे होते हैं, राहु को दे रहे होते, केतु को दे रहे होते. वी आर गिविंग रॉन्ग ब्लेम टू ऑल द प्लैनेट्स, व्हिच इज नॉट राइट. ओके, so in Nadi astrology you clearly know which planet is negative and how you can make it positive. So it gives you remedy also. You get the remedy also for that planet, right? So remedies are a very important part of Jyotish, and our remedies works like magic. You will see my Insta full of feedbacks where people apply remedy and magic happens. I tell all is magic and grace. Really magic happens. It is beyond remedy. Perfect. Yes. एक किसी ने शेयर किया भैया कि Vedic astrologer told me that I'll have a lot of success in life, but nothing happened. So it's tough to believe anything now. Yes, absolutely. So go to a Nadi astrologer and try your hand. See, Nadi astrologer, whatever he tell you, I'll tell you it will be perfect. Why? I tell you. See, what to all my students I teach. First I teach, check whether the chart we have got is right or not. Birth time correction is very, very important, because 90% of the charts have a wrong time. I tell you, either they are 1 or 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes here and there. And in Nadi astrology, even if you move the things from 5, 10 minutes, 2 minutes, the whole chart on many of the events changes, positive to negative. I have hundreds of case studies like that. Just 2 minutes difference, the total perspective has changed. So I have also come across so many people that, some Vedic astrologer told me this was a good time, best of the time, and I have gone through worst of the time that time. And you are the only person who has told me this time was bad. And all the astrologer I went, they were saying this would be a very good time. So many people came to, because suppose somebody is exalted Jupiter and this, your time will be very good, this, that, all those things. I asked that lady, this time was very negative, without even she telling me anything. These years were very negative. We have faced a lot of trouble. She was literally shocked that because she went to world best astrologer, world best, I'm telling you, world best. Few of them are not here.
Then they know name or renown. I said, you're the only one out of all these astrologers who tell me this time was bad. Otherwise, all of them have said this would be a wonderful time. I said, this is the power of Nadi astrology. So that is how it is. So don't worry about the planets. All are good. Just line your karma. Just understand your chart well. If you don't see, many people come to me and say, I don't believe in Jyotish. I said, don't believe. There is no need to believe. You don't believe in rising sun. It happens. So Jyotish will happen to you. You don't have to believe anything. You know, when I do that, I really tell the past, all the things. So they have no choice but to believe. I get many tough people and clients also, they want to test and check. But then when I tell them, so they have to believe. There's no other choice. And the future also happens like that. So most important thing is whether your time is right or not. And if it is not right, I tell all my students how to make it right, how to make it correct. Birth time rectification, very few astrologers know and very few people guide, for sure. This is not that easy, but we make it very easy for students to understand. And that is how the things goes perfect. Yes. भैया एक है बहुत ये क्वेश्चन जो पत्री मिलाने के टाइम में होता है, नाड़ी दोष क्या होता है और काल सर्प दोष क्या होता है? हाँ भैया, काल सर्प दोष। देखिए, नाड़ी दोष को भी आप जो है उठा के अलमीरा में बंद कर दें, ठीक है? उसको कुछ नहीं कर रहे। अभी कल परसों ही आया था जी, हमारे डॉक्टर हमारे सबने बोला कि पता नहीं मैच मेकिंग सब मना कर रहे हैं, नाड़ी दोष बोल रहे हैं। मैंने कहा गो अहेड, देयर इज नथिंग टू वरी। नाड़ी दोष यूजुअली लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे को बच्चा होगा नहीं होगा, प्रोजनी होगा नहीं होगा। हमने कहा वो नाड़ी दोष से नहीं देखना है भाई। हमारी पत्नी के भी सेम नाड़ी है, हमारे तो 2 बच्चे और हमने पता नहीं कितने ऐसे देखे जिनके सेम नाड़ी और उनके बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। So, and Nadi, when we see the Nadi astrology, we know the 2nd house, 5th house, 11th house has to be there for a progeny or for a child. If it is not there, no matter how hard you try, it will not happen. The child and the things will be create a problem. It will be trouble. It will be a tough. But if you have the combination of 2nd house, 5th house, 11th house, same Nadi dosha, any Nadi dosha, it doesn't matter. So just close that concept in the Almira and be free. Nothing in reality which is practically, see, I'm a practical person. I believe in research, I believe in data, I believe in analysis. I'm an analytical person. Software, done so much of coding, now decoding. So without knowing the coding, you can't decode the things, right? Understand? So don't worry about that. As far as Kal Sarp dosha, yeah, the people, although there is nothing called Kal Sarp dosha, but still people say if the Rahu either of side, if most of the planets are there either side of Rahu Ketu, it's called Kal Sarp dosha. And I've done puja, I've gone to Ujjain, I've done this puja, that puja. So I said, now is Kal Sarp dosha okay? No, I'm still suffering. I said, it is not because of Kal Sarp dosha you are facing problem. It is because of a timeline. Because your grahas, your timeline is not right, and you have to do these remedies for your timeline. It is not the Kal Sarp dosha. Because if astrologer can't find anything, then he say, oh, this is your Kal Sarp dosha, this is your Pitra dosha. Oh, come on, man. It is not Kal Sarp dosha. It is not Pitra dosha. That a person of analytical view and a mind which is into deep research and analysis can only tell. Right? So don't worry about Kal Sarp dosha and puja. I tell you, you'll find hundreds of cases. Even the YouTube, the people who are seeing the live, you might have done some remedy for Kal Sarp dosha, but still the problem persists. It should go away, right? If you have done that. So don't worry about the Kal Sarp dosha. Just if you ever have said, then plant more trees. You might have done some harm to the Mother Earth. So simple remedies: plant more trees, take care of trees, water the trees. Your dosha will be getting removed. But it is not something. If your life is not good, some problems are there. Some planetary energies are not aligned. So reach out to Nadi Astrologer and get your chart checked, or become a Nadi Astrologer and check yourself. Okay, join the Nadi Astrology classes starting from 1st of July. This is a golden chance. And Guru Purnima, it is starting, and you have a golden platinum chance. I tell you, don't miss the opportunity to learn the Nadi Astrology. One must do. Every home should have one astrologer. That is my vision. That is I'm taking to the world.
and I will be traveling to the cross world. I will be traveling in August. I'm traveling to Europe. In September, October, I'm traveling to US. I'll be doing many awareness camps for Nadi Jyotish. So if you're interested, you can also reach me if you want, to arrange, or you can, manage a camp, or, do some awareness campaign with me. You want to invite, I should come to your country, your place, your city. WhatsApp me. You'll get the number. We'll put the number. You WhatsApp me. That will be my personal number. It is there on the Twitter. It is there on Insta also. You can do that. Right? So I would like to add here before I forget, there was Desh Kranti, right? 40, 50s, 60, 40, 50s, you can say, right? Desh Kranti. Then there are other forms of Harit Kranti and other things has happened. Then I would talk about more of occult. So then comes Yoga Kranti. Last 20 years, 15 years, it was Yoga Kranti. Now next 20 years is Jyotish Kranti. Okay, next 20, 25 years is Jyotish Kranti, right? So after Yoga Kranti, see, yoga 30 years back, no, yoga was a taboo, but now it is not. Now it is in culture. Jyotish also a kind of people are little afraid. This is false. This is not right. This is, this is for the poor people or whatever. This is not for good people. No, absolutely not. I have taught to people who are working in Microsoft, who are working in Google, who are IAS, who are like politicians. Many of my students are there across world, I tell you. India and across world. Big CEOs, CTOs have learned Nadi Jyotish, and their experience was phenomenal. So you can also learn, right? Yes, Tinka. एक ही ये बार-बार ये पूछ रहे हैं ये सज्जन, how to get free from my past and present karma. Past and present karma. See, past karma को तो गुरु को surrender कर दो, चिंता नहीं करो उसका. Past karma just surrender to Guru. Don't worry, he'll take care. If you don't have Guru, do the Art of Living course first. Happiness course, Google. Do the Art of Living course, happiness course, then you do the silence course. Okay? If you get the Guru, well and good. Your journey is ended. Okay? And then you can surrender. If you don't have a Guru. If you have a Guru, then surrender the past karma. Present karma, you can improve. See, whatever you see in the chart is karma only. What we read, we see. These are the energies. These are karma only. Energy, vibration, karma. These all are one and same thing. These are different names. So how you can improve the present vibration, present karma, present energy? There are so many remedies. I tell you 6, 8 and 12. 3 are the energies for your misery. 6 is disease, debt, litigation. 8 is obstacle, insult, misfortune. 12th is losses, expenditure, outflow of money. In a broader term, there are so many things of 6 houses, also enemies, and 6 houses also, disease and debt and litigation and so many things. Similar 8th house and 12th house. So I say 6th house is seva also. Do seva. 8th house is Padma Sadhana also. Google, YouTube, Padma Sadhana. Do it with the help of YouTube. Okay, there's a proper instruction guide. 12th house is advanced course or silence course from Art of Living. Do that. If you align these 3 energies, seva, Padma Sadhana, silence course, I tell you, most of the planetary energies align. See, it is said in the ancient scriptures. What is said? Whatever is in the cosmos is there inside body also. Whatever is there in the Brahmanda is there in the Pinda also. Pinda is body. All the planets are aligned. There's a talk in my channel, planets and health, something like that. You can see and go in detail. Yat Pinde, Tat Brahmande. Same. So whatever is there outside is there inside. When you do the seva, Padma Sadhana and silence course, all the energies get aligned and your karmas get slowly and gradually, it get reduced. And then you can get over of many miseries and many negative. That is a very fundamental.
But then if you still have a problem, consult an Nadi astrologer, and then we can find some solution and remedies for you. इसी से ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन था कि ऑब्स्टिकल्स बहुत है, सोशल, हेल्थ, डिप्रेशन, करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता क्योंकि ये सारी ऑब्स्टिकल्स मेरे, तो आपने रेमेडी भी बता दिया। और सबसे मजे की बात है पंडित जी की ये सब, हाँ, ये सब रेमेडीज में एक पैसा नहीं खर्च होता है। कुछ अपने ऊपर करो बस, ना के बराबर। देखिए जो भी फीस आप देते हैं कोर्स दिन की, वेरी नॉमिनल, और आप जाते हैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, आप जाते हैं किसी पंडित के पास कि कोई पूजा हवन, हजारों लाख रुपए, मेरे पास तो आते हैं लोग 10-10, 5-5 लाख रुपए खर्च करके, और मैं उनको सिर्फ 10 पैसे का बिना पैसे का, और जैसे थोड़ा सा योगा प्राणायाम और थोड़ा सा मंत्र और कुछ चीजें देता हूँ, कुछ डायरेक्शन देता हूँ, उनका लाखों का फायदा हो जाता है लॉस की बजाय। तो ये तो बहुत ही सीधा सरल उपाय है। आपको अपने कर्मा ठीक करने हैं तो भाई बस जो बता रहे हैं वो फॉलो कर लो, आप देखो आपकी लाइफ में जादू होने लग जाएगा। और जो बीमारी ने लिखा अभी, जो बीमारी सालों से, क्या करें भाई, ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करें, ठीक है, और पद्म साधना रोज करें। 1 राउंड से नहीं हो रहा, 2 राउंड करें। आप ये देखिए ना कि प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी है या मैं ज्यादा बढ़ा हूँ, और बहुत ही क्रिटिकल है लाइफ में, कुछ नहीं हो रहा है, मैं कह रहा हूँ 3 राउंड करें। 2 राउंड 3 राउंड तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भाग जाती है, हमने तो ये देखा है। दूसरा, साइलेंस कोर्स करें, ध्यान करें, ध्यान से ही कर्म करता है, ये बात समझ लीजिए। The key to the matrix, to unlock the matrix, the key to the matrix is meditation, nothing else. See, जब ज्योतिष पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही बड़ी प्लानिंग कर रखी है, बहुत ही बड़ा माया जाल है, हर चीज फिक्स है। Although life is mix of free will and destiny, पर देखिए इसको डीप से समझने के लिए क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी कि कितनी डेस्टिनी है, कितना फ्री विल है, कितना फिक्स है, कितना अनफिक्स है, और जो फिक्स है उसको कैसे चेंज करा जा सकता है। काफी चीजें चेंज भी कर सकते हैं आपकी। अगर इनक्योरेबल न्यूरोलॉजिकल इलनेस के लिए क्या करें, देखिए उसके लिए मैं बताऊंगा विष्णु सहस्त्रनाम सुने। विष्णु सहस्त्रनाम इज वेरी वेरी गुड। सी विष्णु क्या, विष्णु एनर्जी का, एक तो सस्टेन एनर्जी का, और मर्करी रूल्स द नर्व्स एंड नर्वस सिस्टम। यहाँ से यहाँ तक मर्करी रूल करता है, प्लैनेट मर्करी। तो अब जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हमारे पास तो बहुत सारे केस आते हैं, मेडिकल के तो इतने सारे केसेस हैं, आई टेल यू। हमने तो बोला ये इस दिन हॉस्पिटल जाएगा और इस दिन हॉस्पिटल से आ जाएगा, एग्जैक्ट हम ये नहीं बोलते हॉस्पिटल जाएगा, क्योंकि वाणी में बहुत सिद्ध है, तो जो बोलते हैं वो होता है, तो हम ये नहीं बोलते। पर हमें पता है कि ये बंदा हॉस्पिटल में है। तो हम तो एक केस था, डॉक्टर से मिलने गए, हमने कहा, डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको ये प्रॉब्लम, इसका ये फेलियर, इसका ये फेलियर, इसका ये है, इसका ये है, इनको तो महीने से पहले छुट्टी नहीं पड़ेगी। हेड ऑफ द डॉक्टर, आई सेड डॉक्टर साहब इनका इलाज करिए, ये आज तारीख है 1, ये 9 तारीख को डिस्चार्ज हो जाएंगे, 8 तारीख को आप स्लिप बनाएंगे और 9 तारीख को डिस्चार्ज हो जाएंगे। डॉक्टर हमारा चेहरा देखते रह गया, भाई ये कौन है। और 7 तारीख को हमको ढूंढने लग गया, 8 तारीख को तो इतने फोन किए कि ढूंढने लग गया, भैया महाराज आप हो कौन, ये तो सब ठीक हो गया, इसको कल हमें डिस्चार्ज करना है। और ऐसे एक नहीं पता नहीं कितने केस है, वो डॉक्टर अभी तक ढूंढता है हमें। ऑब्वियसली मिले बताए अपने बारे में, तो उनको समझ में आया, भैया वो तो आप हाथ जोड़ लिए हमारे सामने। तो ऐसे मेडिकल में किसको क्या बीमारी है, हम ये अपनी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी क्लास में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में सिखाते हैं, बहुत सारी केस स्टडीज कराते हैं, 50 केस स्टडीज हैं, जिसमें किसी को किस तरह के इलनेस है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कैसे उसका रेमेडी है, किसी को स्किन की प्रॉब्लम है, किसी को whatever problem, you are able to identify the problem, identify the disease and then suggest the remedies also. Although मैं क्वेश्चन में बताता हूँ कि भाई डॉक्टर का काम नहीं करना, आपको डॉक्टर का काम डॉक्टर को करने देना है। एज एस्ट्रोलॉजर डेफिनेटली यू कैन गाइड टू ए सर्टेन एक्सटेंट, बट डॉक्टर काम करने दीजिए। तो वो सब हम बताते हैं कैसे बोलना है, क्या बोलना है। तो देखिए मैंने क्या बोला, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर बनाता हूँ, या मैं कहूँगा मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखाता हूँ, मैं सिर्फ ज्योतिष नहीं सिखाता हूँ, मैं ज्योतिषाचार्य बनाता हूँ। तो इसमें जमीन आसमान का डिफरेंस। अब कई लोग हमको बोलते हैं पंडित जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा वही डिफरेंस है जो 2G फोन और 5G फोन में डिफरेंस है। अब जो तुम 2G फोन में क्या कर सकते हो तुम खुद सोच लो, तुम्हारा कितना स्कोप है वीडियो कॉल का, जानने का, दूसरे के फेस देखने का।
और 5G फोन में या 7G फोन में क्या डिफरेंस है? तो जमीन आसमान का डिफरेंस है, आप मैच नहीं कर सकते, इतना डिफरेंस। पर इजी है, जिसको भी 1 से लेकर 10 तक गिनती आती है उसको एस्ट्रोलॉजर हम बना देंगे, 18 साल से ऊपर। और अभी जो हमारा सबसे सीनियर स्टूडेंट है वो 75 ईयर्स के हैं और वो भी पढ़ रहे हैं ज्योतिष और एकदम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 60 से ऊपर तो हमारे पास कई सारे लोग हैं। तो आपको ये मत सोचिए कि अरे मैं 60 ऊपर हो गया तो मैं ज्योतिष नहीं सीख पाऊंगा, मुझे आएगा नहीं। गारंटी पंडित जी लेते हैं आपको एस्ट्रोलॉजर बनाने की, पर कंडीशन एक है, आप हमारी क्लास अटेंड करेंगे, हमसे हमारा अपना 100% देंगे। ज्योतिषाचार्य और एस्ट्रोलॉजर वो भी कैसा 85 to 90% बनाने वाला, मिनिमम 90% बनाने वाला ज्योतिषाचार्य आपको बनाएंगे। बट हम जो बोले उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी सिंगला जी बताइए। बिल्कुल 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 पंडित जी। और काफी लोग बिलीव भी नहीं करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और फिर बिलीव ना करें तो ठीक है, लेकिन उसके साथ जैसे एस्ट्रोलॉजी का नाम आता है ओहो क्या क्या चीजें बोल जाते हैं, तो उनके लिए क्या देखिए मैं तो ये आप। बोलूंगा, आप नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी हमारे स्टूडेंट्स या हमसे आप अपॉइंटमेंट लीजिए। आप दुनिया में कहीं बिलीव कर नहीं करते, आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए, हमारे स्टूडेंट से अपॉइंटमेंट्स लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनियल्स है। टेस्टिमोनी। आप उनको कांटेक्ट करिए। अब आने वाले टाइम में हमारी साइट है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड, उसमें भी हम अपने स्टूडेंट्स का फोटो डालेंगे, सारे बहुत सारे जो भी करना चाहते हैं तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, आप करिए उनसे, आप हमारे स्टूडेंट से सीखिए, हमसे टाइम लीजिए, जिससे भी लीजिए आप, जैसा भी। मत मैं तो कहता हूँ स्टूडेंट से लीजिए ना, आपको बिल्कुल बता देंगे कि भाई आप बिलीव करें ना करें, वो आपका पर्चा पूरा खोल देंगे। और कुछ बचाओ, कसर बचाओ तो हमारे पास आ जाइएगा, ठीक है। हम तो परसों ये भी बता देंगे परसों आपने क्या खाया था, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि क्लास की डिटेल्स चाहिए और क्या फीस है, ये सब चीजें। तो ये आपके इसमें इंस्टा हैंडल में। हाँ, मेरे इंस्टा हैंडल में, मेरा फेसबुक भी है, मेरे इंस्टा हैंडल है संजीव_एस्ट्रो। उसमें पोस्टर है, पूरा नाड़ी एस्ट्रोलॉजी कोर्स है, उसमें लिंक है रजिस्टर नाउ, उसमें गूगल लिंक है, गूगल फॉर्म है, उसमें फीस अमाउंट सारी चीज़ें लिखी हुई, ठीक है। और एक काम करेंगे, हम यहाँ कमेंट में भी अभी डाल देते हैं, मैं कॉपी करके डाल देता हूँ कि यू नो जो है अभी डाल देंगे, आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा। आप हमारा इंस्टा देखिएगा, मिल जाएगा, राइट सिंधा जी, आई थिंक। हाँ, संजीव_एस्ट्रो इंस्टा हैंडल है पंडित जी का, उसमें आपको इनका फोन नंबर मिल जाएगा। फील फ्री टू कनेक्ट विद हिम ऑन व्हाट्सएप। फीस कितनी है, जो क्वेश्चंस आप आराम से रिलेटेड टू कोर्स एंड ऑल आप आराम से पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर भी हम बता देते हैं, फिर भी यहाँ पर लोग यहाँ ढूंढेंगे, 9810227498। प्लस आपसे रिक्वेस्ट है इतनी, 9810227498। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि बस हमें व्हाट्सएप करेगा। फ़ोन कई बार हम नहीं उठा पाते हैं, नहीं, क्योंकि कई बार कंसल्टेशन में रहते हैं, बिजी रहते हैं। व्हाट्सएप करिएगा, आपको रिस्पॉन्स 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट है, कुछ भी है, आप जो भी है कोर्स का, अभी तो हम कोर्स की ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस पर आप इस व्हाट्सएप में, इस फ़ोन पे व्हाट्सएप करिएगा, हमारा ही नंबर है ये, ठीक है। तो हमारा नंबर पूरी दुनिया में है, देखो हम ट्विटर में भी डाल रखा है, सब जगह डाल रखा है, पब्लिक नंबर है। पर हम जब सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई व्हाट्सएप करें, क्योंकि सबका फ़ोन लेना पॉसिबल नहीं होता, और कई बार हमारे पास हज़ारों मैसेज आते हैं तो टाइम लग जाता है। पर फिर भी हम श्योर करते हैं कि 24 घंटे में आपका रिस्पॉन्ड कर दें, ठीक है। तो थोड़ा अगर डिले हो जाए तो डोंट वरी, ठीक है, पेशेंस रखिएगा। अगर सपोज आपको 24 घंटे के अंदर नहीं मिलता है रिप्लाई, वापस मैसेज कर दीजिएगा, फॉर श्योर मिलेगा। कई बार कई 500-600 मैसेज आते हैं तो कोई डूब जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो अब देखिए जितना हमसे मैनेज होता है, हम खुद लोगों से पर्सनल 1-to-1 कनेक्ट रखते हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि लिटिगेशन में फंसे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसे फंसे हैं, उसके लिए हम कहेंगे कि आप कंसल्टेशन कर लीजिए। हम भी इसी तरह से कुछ, हाँ, बिल्कुल हमको भी कंसल्टेशन लीजिए। हाँ, ये अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, शेयर करना जी चाहते हैं बिफोर बताइए। वी वाइंड अप। ये लास्ट ईयर हमको भी कुछ था, क्यूरियोसिटी थी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, तो भैया से हमने कंसल्ट किया। तो उसमें जो बताया गया, रेमेडीज बताई गई, उसमें एक पैसा नहीं खर्च हुआ। वो कहते हैं ना, उन्होंने कहा कि जितना योगा मैट पे स्वेट करोगे उतने जिंदगी में कम पसीना बहाना पड़ेगा।
तो ये बात गांठ मार ली। और फिर वो सचमुच बहुत बहुत हेल्प किया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर लेवल पे। साधना तो करते ही थे, और साधना भी एक दूसरे लेवल पे आ गई विद गुरु ग्रेस। तो मजा आने लगा, और ना फिर ना डर नहीं लगता है कि अच्छा ये चैलेंजिंग टाइम आने वाला है तो क्या करना, कुछ नहीं पता है कि यहाँ से यहाँ तक चैलेंजिंग टाइम है, ये अपनी साधना में रहो और अपना काम है वो करते जाओ, करते रहो। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप किसी को ना ब्लेम नहीं करते हो, खाली अपने सितारों को ही लगा रहेगा। अब उनको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते है ना, सिर उठा के रात को गालियां दे दो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल किसी बिल्कुल बिल्कुल इंसान से कोई दुश्मनी नहीं रहेगी, कुछ नहीं, बस ये सब चीजें बहुत अपने मन में आती है, और अंदर से ना एक शक्ति रहती है, इंटरनल स्ट्रेंथ किसको नहीं चाहिए, तो ये है। बिल्कुल और बिल्कुल संजीव भैया तो बहुत ही अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर है, और मेरे मेंटर भी हैं, और कहते हैं ना जिंदगी का मार्गदर्शन भी यही दे रहे हैं, और बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा है। और देखिए उसी देखिए, से, जी जी, हाँ हाँ और उसी जी से बोलिए। इंटरेस्ट जगा मेरे को कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहिए। तो फिर 6 महीने का कोर्स था। ये हाँ बहुत, बिल्कुल देखिए, अभी भी हम लोग का आपस में सबका हम लोग का डिस्कशन चलता रहता है। इट्स सच अ रिफ्रेशिंग कोर्स ना, और कितना भी मूड बैच ऑफ रहे। है वो हम, हाँ जो हमारा बैच होता है जैसे सिंगला जी शेयर करी, वो हमेशा रहता है, हमेशा के लिए रहता है। लोग उसमें कोई क्वेरीज भी आती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, पोस्ट कर देते हैं, वहाँ सारे व्यूज पोस्ट होते हैं। तो वंस एन एस्ट्रोलॉजर, यू आर एस्ट्रोलॉजर फॉर लाइफ टाइम सपोर्ट, एज वेल एज आई टेल यू ना, दिस इज द ओनली नॉलेज विच गोज बियॉन्ड। ठीक है, कितने सारे बोल रहे हैं कई लोग, थैंक यू डॉक्टर अपूर्वा, डॉक्टर अपूर्वा ने बोला संजीव इज अ ग्रेट एस्ट्रोलॉजर। सब देखिए, ग्रेटनेस तो सारी मालिक की है। ठीक है, मैं आपको सच बताऊं तो ग्रेटनेस तो सारी गुरुदेव की है, गुरु की है। बस क्या है कि आप उनकी बताई हुई बातें जो हैं फॉलो करते रहें। आपको बहुत सारे शॉर्ट्स और बहुत सारे टिप्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, फॉलो करिए, देखिए, कुछ इंस्टा पे भी मिलेंगे। तो क्या है कि आप अगर ग्रेस पे रहते हैं, डिवाइन की ग्रेस में, डिवाइन में बिलीव करते हैं, और आप थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं, जीपीएस का थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है। तो डेफिनेटली करते रहिए। और सिंगड़ा जी के खुद के इतने एक्सपीरियंस है, इन्होंने खुद जो है, आप समझ लीजिए कि इतने सारे चार्ट रीड कर लिए अभी हैं लोगों को, इतनी अच्छी अच्छी गाइडेंस दे रही हैं। आई एम रियली हैप्पी। मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अपनी प्रिडिक्शन जो ट्रू हुई है वो डालो ग्रुप में, जो भी है, और लोग बहुत डालते हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में डालते हैं, बिजनेस ग्रोथ कैसे होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम है, चैलेंजेस, बिजनेस करें, जॉब करें, सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा अब्रॉड। ठीक है, पल्लवी जी भी ने भी लिखा है, देखो, गाइडेंस रियली हेल्प मी डॉट माई इलनेस, वेरी नाइस, थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू। पूर्वी जी ने भी लिखा है, ब्लेसिंग टू लर्न फ्रॉम यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीवन। आई वुड से दैट कि देखिए ये सब ग्रेस है, गुरु की ग्रेस है, और ये सब ग्रेस फ्लो कर रहे हैं। हम तो ये बोलेंगे कि जो है, अगर आप ऊपर किसी भी शक्ति में बिलीव करते हैं, गुरु शक्ति में, गुरु तत्व में बिलीव करते हैं, तो आप बस गुरु की बताई हुई बातों पे चलें। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, आपको एक थोड़ा सा और ट्विस्ट देके समझाता है बेसिकली, बस। ठीक है, और जाना भी किस एस्ट्रोलॉजर पे, जो गुरु को मानता हो। आई टेल यू, ऐसे जाने से फायदा नहीं है। सोल्यूशन फॉर लेट मैरिज, देखिए अब ये तो चार्ट देखना पड़ेगा क्या है, क्या प्रॉब्लम है, बट इन जनरलाइज डू मेडिटेशन, इन जनरल डू ओम नमः शिवाय, डू मेडिटेशन। हाँ, अगर आपको टाइम जानना है कब तक शादी हो जाएगी, तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कहता हूँ हज़ारों स्टूडेंट्स हो गए, अब तो पूरी दुनिया में हो गए स्टूडेंट्स, और अब जो है आने वाले समय में ज्योतिष क्रांति होने वाली है, समझे। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये सब बड़ा बड़ा काम करेंगे आगे, आप माने या ना माने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छा अच्छा काम करेंगे। तो आप भी बन जाइए उस लीग में, आप बनिए लीडर्स में। तो एस्ट्रोलॉजी सीख के लीडर बनिए कि आप भी आगे चल के पहले प्रैक्टिस कर सके खूब सारी, और फिर पढ़ा भी सके। हम तो कहते हैं आने वाले टाइम में हम खूब सारे टीचर भी बनाएंगे, और उसकी जुगत चालू हो गई है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में वो पढ़ा भी सकते हैं, उनको हम खुद पर्सनली गाइड करेंगे। ठीक है, तो आप जो है जरूर से, भाई रिश्ता आ नहीं रहा है, मैरिड हो रही नहीं हो रही, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे तो बिना देखे नहीं बता सकते हम। ठीक है, देखना पड़ेगा।
और देखिए सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करें। फील फ्री टू रीच सिग्ना जी, फील फ्री टू रीच मी, ठीक है। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, हर तरह की गाइडेंस मिलेगी। और देखिए इस चीज़ की फीस जो है बहुत ही से मिनिमम है, जिस हिसाब से इसका रिटर्न है ना सिग्ना जी, 2 महीने में रिटर्न हो गई फीस, राइट है? जी 2 महीने जी में रिटर्न हो जी। गई, और उसके बाद तो पूरी जिंदगी बोनस ही बोनस है, ठीक है। तो फीस कुछ भी नहीं है इसकी। अगर आप बोले अरे इतनी फीस है, इतनी इतनी फीस क्या, कुछ भी नहीं है। और अब तो ऑप्शन है आप क्रेडिट कार्ड पे भी ले सकते हैं। तो अगर इंस्टॉलमेंट में है तो आप क्रेडिट कार्ड पे कर लीजिए, इंस्टॉलमेंट बनवा लीजिए, ठीक है। तो बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारी चीजें, सिर्फ इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए और जरूर सीखिए। इसे बहुत एफर्ट लगता है, जितना जो फीस है ना उसे डबल एफर्ट मिलता है आपको, डबल रिटर्न मिलता है आपको, मैं बता रहा हूँ। तो आप जो है ना इसकी फीस वगैरह को ऐसा ना सोचे कि अरे ज़्यादा है, कम है, हम तो 5,000 रुपये में सीख गए थे। देखिए 5,000 में सीख नहीं पाए ना, खाली नॉलेज मिला है, पढ़ाई बस थोड़ा वो तो यूट्यूब में और इधर उधर, उसका फ़ायदा नहीं। अगर प्रोफेशनल, मैंने कहा ना, आई कमिट टू मेक यू एन एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। सो ये कमिटमेंट है मेरी, ठीक है। तो आप मुझे बेनिफिट करेंगे। पद्म साधना, अच्छा उदित पूछ रहे हैं, उदित तुम्हें तो पता है, तुम तो इतनी सारी टॉक अटेंड की हो, है? बट ठीक है, देखो पद्म साधना क्या है। पद्म, ये मैंने कहा ना, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, या जो भी कॉस्मोस में, जो भी ब्रह्मांड में, वो शरीर में। जब आप पद्म साधना के वीर्य शासन करते हो तो आपके सारे चक्रास अलाइन होते हैं, और उन सब चक्रा पे ही जो है सारे प्लैनेट्स हैं। इसकी एक मेरी टॉक है प्लैनेट्स एंड हेल्थ करके, मेरे यूट्यूब चैनल पे होगा, हाँ, @संजीवन श्रीवास्तव ऐसे करके है यूट्यूब। आप नाम गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा मेरे को, पंडित संजीव कुमार श्रीवास्तव गूगल करेंगे ना, मिल जाएगा आपको, और हम डाल देंगे यहाँ पर भी। तो आपको हेल्थ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी टॉक मिलेंगी, तो आप सुनिए। तो अभी करते काफ़ी टाइम हो गया सिंगल जी, आई थिंक हाँ, पता ही नहीं पेशेंस है। चला, 10:15 बने जा रहे हैं, एकदम पता नहीं चला। कम से कम हमको तो बड़ा मजा आया, हम जितनी बार भी सुनते हैं मजा ही मजा आता है। और आई होप बाकी लोगों को भी मजा आया होगा। कुछ लोग एकदम बने हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी पूछा लोगों ने। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है ज़रूर से जो है सीखिए, करिए। एवरीबडी शुड लर्न, एंड आई टेल यू एवरीबडी बिकम एन एस्ट्रोलॉजर। सब कोई बन सकता है। डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, आई टेल यू। जो लाइफ कोच है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यू नो एस्ट्रोलॉजी देखिए 90% तक तो ज्ञान आपका, और उसके बाद 10% जो है ना आपका इंट्यूशन। तो कैसे आप अपना इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सब चीज़ें भी, गाइडेंस आपको चीज़ें मिलती हैं कैसे आप कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का तो बहुत ही यूज़ है। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन, ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू रमन जी। सो रमन खाला जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। गुड, आई थिंक अभी एंड करें सिंगला जी, मे बी फिर हम बिल्कुल करें। बिल्कुल, बहुत, हाँ जी, बहुत 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 धन्यवाद भैया। इसमें काफी लोगों को फायदा होगा पक्का, और काफी लोगों ने मन भी बनाया होगा एस्ट्रोलॉजी सीखने का। हम कहते हैं एक बार कर डालो, उसके बाद पैसे तो ईएमआई पे भी तो है, हाँ, करके इमरजेंसी देखो तो सही है और होगा। अपना हो जाता है। और देखिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है। और एक बार ये नॉलेज ले लिया आपने, आपके साथ बुढ़ापे तक है, समझ लीजिए। बुढ़ापे तक सेवा कर सकते हैं, इसको पार्ट टाइम इनकम कर सकते हैं, फुल टाइम इनकम कर सकते हैं। और ये नॉलेज वापस नहीं मिलने वाली है, तो जब तक शरीर है हमारा तब तक दे रहे हैं, आगे पता नहीं कोई देगा नहीं देगा, ठीक है, समझ रहे हैं बात। तो आप कर लीजिए, ये मौका मिलेगा नहीं बार बार, बहुत सुनहरा मौका है। और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में है, गुरु पूर्णिमा पे है, हो रहा है, तो जरूर करिए, इसको मिस मत करिए, ठीक है जी। चलिए ठीक है, आप सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच सीता जी फॉर होस्टिंग एंड फॉर डूइंग सच ए ब्यूटीफुल session on Insta. This is so wonderful, and I thanks to all my viewers, and by Guru grace and blessing, I'm sure you all will be doing astrology sooner or later. Jai Gurudev. जय गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।